Master of Art in Applied Psychology, Clinical and Counseling Practice. Mental health concerns are on the rise in developing countries like India. The globalizing world is witnessing increasing stress level. The process of urbanization, modernization, and globalization have led to an increased momentum of change, poverty, migration, industrialization, rising inflation, violence, upwardly mobile lifestyle, growing aspirations, and media exposure are all contributing factors to the rising tensions in everyday life. See, तो इसमें क्या है कि मतलब for each word है ना, you need to have an explanation कि ये जो एक तो ये अंडरस्टैंड करना कि अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड व्हाई इट इज लीडिंग वेरी मतलब डायनामिक सोसाइटी इज मेकिंग वेरी डायनामिक सोसाइटी अराउंड अस एंड all these things that written here poverty migration industrialization rising inflation all these things how that affects uh, or how does these things is increasing tensions in everyday life ठीक है तो इसको correlate करना तुम्हें आना चाहिए because not everything that you have experienced तो ये problem ये है कि हम बोल तो देते हैं but since we have not experienced तो हमें उसका उसकी clarity या उसका एक know how नहीं पता होता है तो मतलब एक होता है ना कि बाय ऑब्जर्वेशन और बाय टॉकिंग टू पीपल और बाय रिमेम्बरिंग समवन हु हैव someone with you someone you have connected earlier you know who was in tension or stress due to some factor तो ऐसे करके तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा ठीक है the gap Yeah. between individuals resources and life demands is increasing day by day. While the burdens are increasing on daily basis, the existing support system provided by the family, the school, the peer group, and workplace are proving to be insufficient to deal with surging multitude of demands, expectations, rules, and tasks placed on the individual soldiers. इस लाइन को समझे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑब्वियस दीज डेज जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ earlier when we used to have any disaster in our family so lot many people used to come एक वो बनाया हुआ था एक process बनाया हुआ था that was very much religious process but it was actually a मतलब there to involve other people in your life है ना तो there were a community feeling there were a society मतलब feeling of societal strength and a family feeling which helps you deal with not only the stress and tension but you also get lot many help from other people and a lot many support from other people to keep up मतलब to maintain the मतलब होता है ना आउटकम ऑफ योर लाइफ और जो भी आपके डिजायर्स हैं और सक्सेस हैं या मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता था थ्रू फैमिली थ्रू स्कूल बट दीज डेज since the society is being very individualistic है ना आसपास दो लोग बैठे होते हैं बट दे नेवर टॉक टू ईच अदर बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन देयर फोन so ऐसे में that support system has become weak and it is very insufficient to deal with that kind of demand or expectations either in term of your mental health or any support system ठीक है मैंने जस्ट Yes. इसको एक्सप्लेन किया है मतलब you must have understood what I am telling ठीक है Yes, sir. the mental health survey 2015-16 showed that the treatment gap of mental disorder ranged between 70 to 92% for different disorders. NC total report suggests that total number of psychiatrists in India could be between 3,500 and 5,000, which translates that one psychiatrist to every 2 lakh or 3 lakh people, 2 lakh to 3 lakh people. The existing training infrastructure procedure produces about 320 psychiatrists and 50 clinical psychologists and 185 mental health nurses per year. Scarcity of trained and supervised services and professionals in the fundamental professional is the one of the fundamental barriers to progress of mental health services in India. So ये तो तुम समझ ही गए but if I'll ask what are the other barrier to the progress of mental health services in India तो उसमें क्या बताओगे because they are telling कि this is one of the fundamental मतलब lack of trained staff and lack of मतलब low capability of our system to produce trained staff and this is one of the fundamental barrier so what are the other fundamental barriers do you see in
in the progress of to the progress of mental health services in India. So can you name one or two right now? So, so the fact that mental health awareness hasn't been able to reach each and every nook and corner of the country. Hmm. So it is not just about lack of trained staff, but also about how much the current youth of this country and the citizens of this country are able to be aware about the importance of mental health. तो वो एक Exactly. प्रॉब्लम है. Or stigma and other things are also there. Yes sir, stigma and taboo. हाँ, टैबू तो वो तुम्हें बोलना है, तो जल्दी जल्दी उसको बोलोगे ना, जो जैसे अगर इफ यू हैव 3 and 4 पॉइंट्स लाइक दिस, तो पहले उसको बोल दो, देन यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है, Yes sir, तो ठीक है पहली सर. चीज को ही ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो विल बी मिसिंग, और वो टीचर भी हो सकता है ही माइट बी एक्सपेक्टिंग अदर 2 वर्ड्स, मतलब कि Yes जल्दी sir. जल्दी ये बोले, तो पहले बोल दो कि इफ यू आर दिस दिस दिस, बिकॉज सिंस मतलब यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, तो टीचर Yes मस्ट बी sir. नोइंग द डिटेल ऑफ दैट, Yes so sir. your one word will suffice that, है ना, the Yes sir. clarity, हाँ, so let's go ahead. This clearly points out to the need of the trained mental health professionals who can effectively respond to the mental health needs of the community. So it is in the context of scarcity of trained professionals to provide mental health services in the country that the School of Human Ecology in the Tata School of Social Science, Mumbai first launched MA in counseling program in 2009. Since then, through the process of constant reflection, ये क्या होता है through the process of constant reflection? Tell me. तुमने पढ़ा है ना ये डिस्क्रिप्शन पहले भी? नहीं सर. वाह, कान पकड़ो तो तुरंत पकड़ा तुमने सर. दोनों हाथ से। तो ये तो नहीं पढ़ा. ये इसको बिना पढ़े कैसे तुम प्रिपरेशन कर भी रहे हो, और कैसे 2 बार तुमने इंटरव्यू भी दिया, मुझे अब समझ में नहीं आता। मतलब दिस इज द बेसिक टास्क दैट यू हैव टू डू, है ना, Yes इन द sir. स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, इन Yes sir. इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि what you see according to that you reflect. So external environment को रीड करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके हम सिलेबस को डिजाइन करते हैं। Yes समझ में आ sir. रही बात? दिस इज हाउ Yes वी sir. रिफ्लेक्ट। And again, other way to design this curriculum is feedback from the students and from the field. The School of Human Ecology has designed a single master program to be titled MA in Applied Psychology, Clinical and Counseling Practice. ठीक है? The scope of the proposed MA in Applied Psychology course is to make interventions. ठीक है, पहले देखो ये कोर्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट to make interventions, the aim of which is enhancing person environment fit, building resilience for effective coping and enhancing well-being and quality of life. ठीक है, द प्रोग्राम विल फोकस, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे वो हमारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, उसमें हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द एडवांटेज दैट सोसाइटी विल गेट फ्रॉम द कोर्स एंड व्हाट इज द एडवांटेज दैट द नेशन विल गेट फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, Yes sir. याद है तुम्हें? उसको उसको वो दिखाया है तुमने मुझे? हाँ सर, दिखाया हुआ है. उसको दोबारा एक बार दिखा लेना, ठीक है? ठीक है. आफ्टर इसको एडिट भी करना है इसको, सी तो मतलब द सोसाइटी विल गेट दिस बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स, है ना, which this course is aiming for कि interventions to the aim of which is enhancing person environment fit, building resilience for effective coping and enhancing well-being and quality of life. The program will focus on the development of practitioners with sound base in research as specified in building model and clinical psychological training. Sound base in research कि क्यों जरूरत है, मतलब why we can not practice the model which is already there, है ना, बॉल्डर मॉडल फॉर, सॉरी बिल्ड नहीं है, बॉल्डर मॉडल फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। सो ये पढ़ा है तुमने बॉल्डर मॉडल? नहीं सर, ये पढ़ाया तो नहीं गया हमको. नहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़ोगे क्या? अब ये डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको पढ़ना था तुम्हें। सो माय पॉइंट इज कि व्हाई दिस प्रोग्राम इज टीचिंग यू, ट्रेनिंग यू फॉर रिसर्च आल्सो, because all the model that you study or that you see, most of them has been developed in European or American or other countries, है ना, in the globe.
So all Mm. those model, when we are using or we want to use them in Indian context, you need to customize this and make adaptation according to the Indian environment. Okay. So to do that, you need to have matlab, a research capability so that you can find what exactly is the need right matlab, here in India, and then you're going to customize the model. ठीक है. मतलब रिसर्च का एक बहुत बड़ा Yes, पर्पस यहाँ sir. पे ये भी है. So as scientist practitioners, however, मतलब as even you are a practitioner, मतलब scientist हो तो तुम्हें research करने आना ही चाहिए, practitioner भी हो तब भी तुम्हें research करना आना चाहिए, because you have to adapt the models. However, Yes, sir. the stance informing the course contents and pedagogy will be a developmental and contextual one. And although matlab, they will keep all those teachings, है ना, developmental countries, मतलब developmental जो हमारा ये है society का feature है अभी, and they will try to keep it contextual also, but still you need to know research, because you might not be just using only those models, those practices which is being taught in tests. You know, you can also gain learning from new researches and other sources. Okay, because all those things that is there in psychology cannot be taught in these 2 years only. So आप हालांकि मतलब the college will try to make it very contextualized, है ना, and keep it very much developmental in nature, but still you might have to use other models, and for that you have to do research to customize it for, yeah, contextualize it for the Indian perspective. Training will be geared towards increasing awareness of diversity and socio-cultural context in which individuals are immersed. मतलब ये समझना जरूरी है कि मतलब डाइवर्सिटी का नेचर क्या है हमारे यहाँ, and how do you read diversity, because for using any model or any theory that is there in psychology, जब आप उसको पर्सपेक्टिव एक लोकल पर्सपेक्टिव से यूज करते हो, तो डाइवर्सिटी फैक्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, एंड ऑफ कोर्स द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, है ना, उस डाइवर्सिटी का ही एक बहुत बड़ा पार्ट होगा ये. The specific goal of MA Applied Psychology will be to equip learners to practice developmental mental health and issue-based assessment and intervention with a focus on primary prevention and therapeutic intervention. ठीक है? Primary prevention और therapeutic interventions का क्या मतलब हुआ? The primary prevention मतलब prevention of any हाँ, uh, prevention मतलब कि you try to stop something to get happen, yeah, है ना? yeah. हाँ, और therapeutic मतलब once something has happened, then what you can do therapeutic way to solve that problem. ठीक है? Yes, sir. Or disorder. The Yes, current MA program aims to develop students' self-awareness and a sound theoretical base from which they can build skills necessary for practice in fieldwork and internship setting. मतलब समझ रहे हो, theoretical ways from which they can build skills. So what yes, they are sir. saying is very important line. ये आपको self awareness and sound theoretical base देंगे. वहां से मतलब from which you can build necessary skills for practice in fieldwork and internship settings. See? Yes, sir. So Theory को मतलब basically apply करेंगे. apply करना होगा तुमको, मतलब they Yes, will be sir. giving you the base and you Yes, need sir. to practice it by मतलब doing all these internship on fieldwork, so Yes, that you sir. can create or build some skills for yourself. Yes, sir. The emphasis is on seamless blend of theory and practice. The focus is also on developing research capability of a student. Supervision is inbuilt into the practice component, allowing students to benefit from feedback provided by trained professionals in the field. Okay. So this is all in your course description, and I think this suffices the very need of understanding. So what is going to be what is going to be the course and curriculum there? Because the thing that you have wrote in your मतलब वो, or course description or why this course, ki you'll be doing appearing for all the curricular or extracurricular activities. Now you can actually say what is your focus area and what can be your focus area in this particular course. ठीक है? Yes, sir. Sir, actually, मैंने अपने वाइडर कोर्स में Hmm. I started. मैं actually skeptical हो रही थी कि whether I should start with any facts about the current mental health situation in India,
or should I start with how I started liking psychology in the first वहीं place? से स्टार्ट करो, बट डू नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग स्टोरी ऑफ दैट, है ना। हाँ सर, वो ब्रीफ है काफी। हाँ, और वो भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत वो बचपन से कुछ हो, है ना। नहीं नहीं, हाँ सो हाँ। सो सब्जेक्ट यू कैन नॉट अप्रिशिएट इन योर चाइल्डहुड, मतलब एनी सब्जेक्ट। जैसे कोई यस बच्चा सर। बोलता है कि हम बचपन से फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो ही नहीं माइट बी नहीं। अ प्रोडिगी, है ना, बट नॉर्मल स्टूडेंट कैन नॉट गेट इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप मैंने आप एक्चुअली, जी आप जी। अच्छा स्कोर करते थे, दैट्स ओके, है ना। यू आपको अच्छा टीचर मिला होगा, या उस समय वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा पढ़ने में, तो अच्छा स्कोर करते थे। बट द रियल इंटरेस्ट दैट यू गेन इज इन योर +2 और इन योर ग्रेजुएशन ओनली, ठीक है। यस सर। सर बचपन से एक्चुअली वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्ट उससे किया है, फिर उसके बाद मैंने फैक्ट्स मेंशन किए हैं अबाउट द करंट मेंटल हेल्थ ठीक है, सुनो ना, सिनेरियो। पहले ये क्या कह रहे हैं कि पहले इसको एक बार और पढ़ लो, सी। यस सर। और मैंने रिकॉर्ड तो कर ही दिया है, तो जी। उसको